हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे और इसके हम इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। एंड हियर इज वन स्पेशल टर्म इन द पाइथन विच द सेल्फ वेरिएबल, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फर्स्ट वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टॉप डाउन एंड द बॉटम अप अप्रोच। देखिए, यदि मैं टॉप डाउन अप्रोच के बारे में आपसे बात करता हूँ, तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है और किस तरीके से हम उसका यूज करते थे। हम टॉप डाउन अप्रोच में हमारी प्रॉब्लम को एक बड़े पार्ट में देखते थे और इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते थे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते थे मॉड्यूल्स। तो हम इस बड़े पार्ट से छोटे पार्ट्स की ओर जाते थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली हम इसको क्या करते थे, मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते थे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को मॉड्यूलराइजेशन भी बोला जाता था और इस मॉड्यूल के बेसिस पर हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। But in a bottom up approach, we take a simple module or we take simple entity, we check for its working, we test it, and by generating the communication between these entities, we move further. This kind of approach is a bottom up approach. Bottom up approach. So, if I talk about the object oriented programming, that is OOPS, object oriented programming is nothing. Object oriented programming is a bottom up approach. It means its compilation start from the bottom instead of top down. So, what does it mean exactly? And what do you mean by the object oriented programming? To understand this concept, first of all, we need to understand the class, object, and constructor. So, first of all, let me define the object. Object is nothing, it's a any real world entity is an object. What does it mean? Like car, bike, SBI bank, etc. These are the objects. Then, if this is the object, then what do you mean by the class? Need to be understand very clearly. In an object, there are two important things. With every object, there are two important things. One is properties, and second one is behavior. So, in object oriented programming, these properties are nothing, these are the variables. This behavior is nothing, these are methods. How this object look like, it depends on the class, because every class we create the objects and we utilize it in our system. So what is the class? Class is nothing, we can say it's a blueprint of object. It means what class contain? Class basically contain the properties and behavior. So this is what the object and this is what the class. So let me see practically that how to use the object and classes and how to define the object and classes in Python programming. There is one more important concept before moving further for the implementation, that is the object reference. Suppose I am having one variable x
and I'm creating here 5, x is equal to 5 in the Python if I've written. So when the 5 is created, the Python virtual machine will be giving the memory location to this 5 integer, and this variable will be pointing to this object which is containing 5. That is for the reason in a previous video we have discussed in Python everything is object. So this x is nothing. X is a reference variable which is pointing to this memory location where 5 object is created. Now we see the practically that how to write a classes, how to create a reference variable, how to create an object, how to utilize the constructor in a Python programming. So let me start. So simply what we have defined till now the class is nothing. Class is a blueprint of object which contains properties, behavior. Properties are mapped with the help of variables in class, and behavior is mapped by methods of class. So now we define the object. In layman terms or in general term, the object is a real-time entity. Programmatically, object is nothing. It's an instance of class. Let in a Python how to define a class. तो we check for the syntax. तो यदि आपको पाइथन में क्लास डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले नंबर एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है क्लास, है ना? एंड देन यू विल बी राइटिंग द नेम ऑफ क्लास. It's not mandatory in the Python that the class name should be start from the capital letter only, but it's a recommended instructions that you should use this method only. So suppose I am creating one class here, that is suppose a student. So we are having one student class. So when we define a class here, the next thing, very important thing that should be in the practice of the students, that we need to define the documentation. This is a student class. Now, inside this class, we can write our variables and our methods. So this is what the syntax for the class. Suppose when you create, suppose when you use, like we are having s is equal to that student, and when I run this code, so can you see this? This is nothing, it's a constructor which is used to initialize the student type of object, and this s is nothing, it's a reference variable which is pointing to the student type of object. So this s is the reference variable, and this student is basically a object. So this is about the class. This s is pointing to the object of the student class. So this object is nothing, it's an instance of student class. अब देखिए, हम जब इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या इस क्लास को डिफाइन करते हैं,
तो हम हमेशा इस क्लास के डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किस तरीके से करते हैं? यू कैन सी दिस जस्ट लाइक अ फंक्शन दैट वी हैव डिफाइंड द डॉक स्ट्रिंग। हमने जैसे ही शिफ्ट टैब इस क्लास के सामने करा, तो कैन यू सी दिस कि इसकी डॉक स्ट्रिंग आपके सामने है और ये आपको बता रहा है कि बेसिकली इस क्लास का काम क्या है ना? सो दिस इज़ द स्टूडेंट क्लास बेसिकली। सो दिस इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ दिस डॉक स्ट्रिंग। देयर इज़ अनदर वे टू हैव दिस डॉक स्ट्रिंग। पाइथन में एक स्पेशल मेथड्स होती हैं, समटाइम्स दीज मेथड्स आर कॉल्ड द मैजिक मेथड्स। सो if I'm using, if I'm writing like this, print dot underscore doc, this code will give you, this is a student class, means the similar that you were getting in terms of the help by using the shift tab, आप student dot underscore doc को यूज कर कर भी उस डेटा को फाइंड कर सकते हैं ना। यदि आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो यू कैन यूज द हेल्प फंक्शन and where you will be passing the student class. So when you run this codes, you will be getting all the information related to the class. And this is the student class. This is what the description. And हम underscore dictionary का यूज अभी देखेंगे. And we will talk about each and everything. So इस तरीके से आप क्लास की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इस तरीके से आप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं. And this is what the way by which you can create your object. So in this we have seen this is what the reference variable, s is the reference variable, the student is a object. Now we move for constructor. अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से सी सी प्लस प्लस में हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, हम बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं ना, बट हाउ टू डिफाइन दिस कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, दिस इज अ डिफरेंट थिंग इन द पाइथन. सो हाउ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, लेट वी सी हियर. हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे स्टूडेंट जो है हम उसको ही आगे बढ़ाते हैं. सो हम फिर से क्लास डिफाइन करते हैं, दैट इज क्लास स्टूडेंट. अब इस क्लास के अंदर हमने हमारी डॉग स्ट्रिंग जिस तरीके से ली थी, तो वी आर हैविंग दिस डॉग स्ट्रिंग लाइक आई एम जस्ट डूइंग द कमेंट हियर, इट्स अ डॉग स्ट्रिंग. पुट के अंदर हम लिखते हैं दिस इज डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ क्लास स्टूडेंट. ओके, तो मैंने बताया आपको कि क्लास जो है हमारी, उस क्लास में हमारे पास जो है बिहेवियर और प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज किसके थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं हमारी, एक वेरिएबल्स के थ्रू क्लास की, और मेथड के थ्रू हम उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? साथ में वो बिहेवियर किस तरीके से बनाएंगे, उन प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से यूज करेंगे. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टर. तो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो स्टूडेंट क्लास के लिए होगा हमारा. दिस इज द नोटेबल पॉइंट हियर कि पाइथन में जैसे आप अदर सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो योर कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज द क्लास नेम, है ना. बट इन अ पाइथन देयर इज अ स्पेशल मैजिक मेथड बाय विच यू विल बी डिफाइनिंग योर कंस्ट्रक्टर. आप अपना कंस्ट्रक्टर उसके थ्रू डिफाइन करेंगे हर बार, और वही मेथड आपको हर क्लास के लिए यूज करना है. तो वो मेथड का नाम क्या है हमारे, वो मेथड है हमारी अंडरस्कोर इनिट. तो जब हमने फंक्शन डिफाइन करने का तरीका देखा है, हम उसी तरीके से इस मेथड को यूज करेंगे. एंड द नेम ऑफ दिस मेथड इज अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर. नाउ one important thing is here, when you define this constructor is by default a instance method. ऐसी मेथड जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं जिन मेथड्स को, और जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बिहेवियर के लिए रिक्वायर होती हैं, उन मेथड्स को हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, है ना. इन मेथड्स के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो कंस्ट्रक्टर भी एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर मेथड है, और सॉरी इंस्टेंस मेथड है. इस इंस्टेंस मेथड में सबसे पहला आर्गुमेंट होता है, एक आर्गुमेंट हमें इंपॉर्टेंटली पास करना पड़ता है. दैट आर्गुमेंट इज नथिंग, at most of the places and most of the resources available on the Google, you will be finding the name of this variable is the self variable.
दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर, दिस इज वेरिएबल, इट्स नॉट अ कीवर्ड, है ना? तो सेल्फ का ही आप यूज देखेंगे बहुत सारे प्लेसेस पर। इसके अलावा यदि मैं कुछ और वेरिएबल्स को पास करना चाहता हूँ, सो सेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंस्टेंस मेथड पॉइंट ऑफ व्यू। सो नीड टू फोकस हियर दैट सेल्फ के बाद मैं वो सारे पैरामीटर्स जो मेरे स्टूडेंट को मैं देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर मैं बोलता हूँ कि इट्स अ रोल नंबर एंड सपोज नेम एंड दैट इज मार्क्स। तो व्हेन आई डिफाइन दिस कंस्ट्रक्टर, मुझे इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट जो है सेल्फ पास करना होगा। अब दिस सेल्फ आर्गुमेंट इज नथिंग, इट्स अ दिस पॉइंटर इन जावा। व्हाट वी कैन से, द सेल्फ इज अ वेरिएबल विच पॉइंट टू द करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ एक ऐसा वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। अब यदि मैं पैरामीटर्स को जो पास किए हुए हैं एंड आई वांट टू डिफाइन द वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स को डिफाइन करना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल्फ का यूज करूंगा। इस सेल्फ के यूज से मैं जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे वो डिफाइन कर सकता हूं। लाइक मैं नेम में नेम पास कर रहा हूं, और पर जो है हमारा उसमें रोल नंबर पास कर रहा हूं। या another variable that is marks. In this marks I am passing the marks only. वेरिएबल्स जितने भी बन रहे हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स, है ना? हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन दिस इज व्हाट द वे टू पास द पैरामीटर एंड इन द फॉर्म ऑफ द लोकल वेरिएबल्स, और इन इंस्टेंस वेरिएबल्स में हम इस कंस्ट्रक्टर में हमारा डेटा पास कर रहे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, कि हमने सेल्फ आर्ग्यूमेंट को इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पर, है ना? इट्स अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली हम क्लास में इन वेरिएबल्स को डिफाइन करके, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके हम एक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, हमारी जो यूजर डिफाइंड मेथड है। सपोज वो मेथड में लिखता हूँ स्टूडेंट इन्फो। अंडर दिस मेथड अगेन दिस द इंस्टेंस मेथड, दैट इज व्हाट द रीजन कि हमें इसमें सेल्फ पास करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में और डिस्कस करता हूँ, सेल्फ के बारे में आपसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ कि नेम ऑफ स्टूडेंट इज नथिंग, इट्स अ सेल्फ डॉट नेम। सिमिलरली प्रिंट number of student is nothing, self dot roll number. Finally, in the last, print as self dot marks. Okay, so when you run this code, you can see there is no error in this code. So to define this constructor, we have to use a init magic method, the constructor definition. Here is one mandatory argument for this constructor or for any instance method in the object oriented programming, that is self. लेकिन इसको एक बात समझना है, let I first create one object here, s, and that is the student. इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करा है, ये कहीं ना कहीं हम पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर में। तो मैं बोलता हूँ सपोज रोल नंबर है मेरा 1, माय नेम इज राहुल, एंड माय मार्क्स आर सपोज 100। When I call s dot student info method, when I run this code, student, okay, it should be student. So you can see the name is Rahul, roll number is 1, and marks are 100. So just like a C++ Java programming, we could be able to define a class student in the Python,
यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए इनिट मेथड का यूज़ करा है और एक नॉर्मल इंस्टेंस मेथड को बनाने हमने डिफाइन करने के लिए भी डेफ कीवर्ड के थ्रू करा है। बट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हियर वी हैव यूज्ड द सेल्फ आर्गुमेंट, है ना? अब जब आप इंटरनेट पर रिसोर्सेज सर्च कर रहे होंगे यू विल बी फाइंडिंग द सेल्फ बेसिकली a argument, it's not a keyword, so it is not mandatory to use the self word here. You can use any variable here, like, but it should be the first argument. Suppose I am taking this code here, instead of self, if I am taking x here and then I do x dot name, x dot roll number, then x dot marks. Similarly here x dot name, x dot roll number, x dot marks. When I run this code, you can see there is not any kind of error. When I take this object here and execute it, can you see this? X is not defined. Okay, fine. So where is, okay, here should be X also. So when you run this code again, you are having the same output. इसका मतलब क्या है? सेल्फ हम बार बार लिखते हैं क्लास के, हम इंस्टेंस मेथड को यूज कर रहे होते हैं, हम हमेशा सेल्फ आर्गुमेंट से उसको स्टार्ट करते हैं। चाहे मैं कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो कंस्ट्रक्टर भी अपने आप में एक इंस्टेंस मेथड ही है। सो दैट नॉट मैंडेटरीली नेम गिवन एज अ सेल्फ, बट फॉर द सेक मतलब सिंप्लिसिटी पर्पस एंड for the habit purpose we always use the self most of the places when we define the class and instance methods and instance variables inside the class, तो self का यहाँ पर हम यूज करते हैं। So till this point we could be able to understand this underscore init method is a basically for the constructor purpose। और constructor का यूज हम क्यों करते हैं? constructor का यूज हम हमेशा करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो एग्जांपल देखा सेल्फ मेथड को आपको समझाने के लिए मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया। इफ यू वांट टू चेक दिस इज इट वर्किंग रियली, इट्स वर्किंग एज अ I will say object initializer. So let me check when we create the object and defining the constructor here. I am passing the self here and let I take print constructor. When we have the class, let I remove it from here. When I run this code and again create the object, can you see the constructor executed? So whenever you create the object, by default this constructor execute. So the task of constructor is what? The initialization of the object. So we have passed the various parameters for the constructor and we could be able to initialize this object. Here S is the reference variable. This is what the object has been created and this is what the method or behavior has been called with the help of reference variable. So for this video, it's all from my side. Thank you.